Good morning to all of you. Audible? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yesterday, we were discussing about the assessment, various kind of assessment. In that, we have discussed about the summary assessment. Then we have discussed about the scrutiny assessment. Now today, the next point is based judgment assessment and income escaping assessment. So these are the two type of assessments that we are supposed to discuss today. Okay. So let us start with the base judgment assessment. I have discussed with you many times that what is base judgment assessment. That if you have not filed your income tax return, then assessing officer will issue the notice that you file your return. Still, if you will not file, then whatever documents he has, based on that he will do the assessment. That is called base judgment assessment. Sometimes suppose you may have filed the return. Sometimes you may have filed the return, but and in that the scrutiny has come. But under section 143 subsection 3, the scrutiny assessment has notice has arrived. And the assessing officer may have asked to you to submit certain documents, proofs, evidences to support your income tax return. But suppose you fail. You all know that yesterday I have discussed that whenever the scrutiny assessment is carried on, it is a detailed assessment in that the assessing officer has a right to call for the information or the documents or evidences to support your return. So, and he gives you certain time that within this time period you are supposed to submit your supportings. Okay. But suppose if you fail, then also he can go for the base judgment assessment. So there are two possibilities in which the assessing officer can go for the base judgment assessment. You have not filed the return at all, then he asks the information, and you fail to submit the same. He will go for the base judgment assessment. Second situation is that you have filed the return, you have written the notice for the scrutiny, and but still you are unable to provide the supporting to support your return. Okay, then in that case also this base judgment assessment can be done by the assessor. So now let us discuss it from the material that what is the base judgment assessment. Okay, so let us start with the base judgment assessment under section 144 of the Income Tax Act. You can see this assessment is carried out as per the based judgment of the officer on the basis of relevant material he has given. So you can see here from the definition or from the introduction part of this base judgment assessment, it is very much clear that here the assessing officer himself will carry on the assessment. Okay, based on the information he has gathered or the information which is available with him. Okay, and according to him, whatever is the best tax liability is suit to you, that he will decide and do the assessment. Okay, that's why it is known as the base judgment assessment. So here it is mentioned, this is the assessment carried out as per the base judgment of the assessing officer on the basis of the relevant material gathered. So this assessment is carried out in the cases where the taxpayer is failed to comply with the requirement specified under section 144. Okay, so section 144, see, every assessing officer will not go for directly the base judgment assessment. He will provide you opportunity to submit your information, to submit your supporting evidences. And in that case, if you fail, then whatever information he has gathered, based on that, he will do the assessment. That is called the base judgment assessment. Okay, so in the base judgment assessment, certain conditions are get satisfied, and if it is satisfied, then and then the assessing officer can go for the base judgment assessment, because this is the last kind of assessment. Okay, and he is, before doing so, he is required to give you every opportunity. Okay, uh, to submit your claim. That's why देखो कुछ condition satisfy होनी जरूरी है, and if it is satisfied, then and then uh, he can go for the base judgment assessment.
You can see a scope and assessment under. So every time he cannot go for the base judgment assessment, because assessment is carried out in the cases where the taxpayer fails to comply with the requirement specified under section 144. So we will understand that when he can go for the base judgment assessment. So let us understand the scene when he can go for the base judgment assessment. Okay, so as per section 144, the assessing officer is under obligation to make the assessment to the best of his judgment in the following cases. So in only these two cases, he has to go for the base judgment assessment. Every time he cannot, suppose if you have filed the information, if you have filed your return, you are regularly submitting your information, whatever is demanded by the assessing officer, and still you assessing officer will go for the base judgment assessment, and it is not a right way. Only in these two situations, assessing officer can go for the base judgment assessment. So what are that situation? If taxpayer fails to file the return within the due date prescribed under section 131 or a belated return under section 1939 subsection 4 or revised return under section 139 subsection 5 or updated return under section 139 8A. मतलब see, you know that you are having a following ways to submit your information about your income to the assessing to the income tax department. What are the ways? You can file your regular statutory return under section 139 subsection 1. अगर वो किया है, अगर आप या तो फिर वो नहीं किया है, तो you can go for the B later return. That also we have discussed 139 subsection 4. So suppose if you file either of these two, but if you feel that there is a mistake made by you, you can go for the correction and file the revised return in the section 139 subsection 5. और suppose इसमें से कुछ नहीं किया, last option is also available that after the end of the assessment year also you can file the income tax return that is known as the updated return under section 139A. लेकिन आपने इसमें से कुछ नहीं किया. देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, a taxpayer is fails to file all of the return. मतलब आपको वो एक तरीके से तो रिटर्न फाइल करना था, आपने इसमें से कुछ नहीं किया. ओके, मतलब आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया. या तो फिर आपने क्या किया है, देखो आपको स्क्रूटिनी के लिए नोटिस आती है कि भाई आपको स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए आपका रिटर्न सिलेक्ट हुआ एंड यू हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन. एंड सपोज वो इंफॉर्मेशन आपने नहीं दिया तो भी वो बेस जजमेंट असेसमेंट में जा सकता है. इफ द टैक्सपेयर फेल्स टू कंप्लाई विद all the terms of the notice issued under section 142 subsection 2, मतलब this is the notice for the scrutiny assessment. पर ये नोटिस के परस्यूएंट में अगर आपको जो रिप्लाई देना था वो आपने नहीं दिया, या तो फिर आपने आपका ओरिजिनल रिटर्न ही नहीं फाइल किया. So in these two situations, okay, you have not filed the return at all. Suppose if you have filed and notice is received and in pursuant to notice whatever replies you are supposed to submit that you have not submitted on time, okay, in spite of the notice you are failing to give the reply to the notice, then he can go for the base judgment assessment. Okay, देखो 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस कब आता है? असेसिंग ऑफिसर कैन इश्यू द नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 आस्किंग द टैक्स पेयर टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. ओके, सॉरी 142 सबसेक्शन 1 वाला क्या है, वो स्क्रूटिनी का नोटिस 143 में आता है. 142 का नोटिस है. 142 का नोटिस क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड. स्क्रूटिनी वाला नहीं, सॉरी. देखो अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया होगा ना, तो असेसिंग ऑफिसर आपको 142(1) में नोटिस देता है. असेसिंग ऑफिसर कैन इश्यू द नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) asking the taxpayer to file the income tax return if he has not filed the income tax return, or to produce the cost to be produced such as account document as case may be, and to furnish in a writing the verified in the prescribed manner the information in a prescribed manner the information in a such form and in a such point or matters. Okay, 142 का नोटिस आपको ये सब चीज़ों के लिए दिया जाता है. अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो फाइल करने के लिए बोलता है, या तो फिर रिटर्न फाइल किया तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन कोजेज or some authentication in a prescribed format he require, then he can ask to give you the notice under section 142 subsection 1. पर आपने वो नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, वो 144 के बेस जजमेंट असेसमेंट में जाएगा.
या तो फिर आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, तो वो बेस जजमेंट असेसमेंट के लिए जाएगा। बस इफ टैक्स पेयर फेल्स टू कॉम्प्लाई विथ द डायरेक्शन इश्यूड अंडर सेक्शन 142(2)(a). 142(2)(a) क्या है? देखो 142(2)(a) डील्स विद द स्पेशल ऑडिट। आपको असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने कुछ आपका रिटर्न फाइल किया है और उसके अंदर आपको ऑडिट करवाने की जरूरत है, तो ही कैन गिव यू अ डायरेक्शन कि यू सबमिट योर रिटर्न अगेन आफ्टर डूइंग गेटिंग इट स्पेशल ऑडिट। ओके, आपको ऑडिट के प्रोविजन लागू नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि आप ऑडिट कराओ, तो ऐसी नोटिस आपको 142(2)(a) में देता है। और देखो आपने वो ऑडिट नहीं करवा, so as per section 142(2)(a), if condition justifying the special audit is given are satisfied, then assessing officer will direct the taxpayer to get the accounts audited from the chartered accountant or inventory valued from the cost accountant nominated by the principal, chief officer, chief commissioner or commissioner, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर टू फर्निश द रिपोर्ट। मतलब देखो जो कमिश्नर्स ने नोटिफाई किया हुआ, कमिश्नर के द्वारा जो अप्रूव किया हुआ, नॉमिनेट किया हुआ जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, उससे आप आपकी इन्वेंटरी वैल्यू कराने के लिए आपको नोटिस दे सकता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराने के लिए वो नोटिस दे सकता है। और इफ आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स पेयर फेल्स टू कॉम्प्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, ये अपना वो स्क्रूटिनी असेसमेंट वाली बात है। मतलब 3 नोटिस आ सकती है आपको। देखो एक 142(1) की, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस दिया आपको, ठीक है। या तो फिर आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगना है तो भी 142(1) में जाएगा वो। सेकेंड, आपको ऑडिट करवाने के लिए वो कह सकता है अंडर सेक्शन 142(2)(a). ओके, या तो फिर आपको ये नोटिस आया 143(2), that is the notice for the scrutiny assessment. So there are 3 sections: 143 subsection 1, normal notice to file the return; 143 subsection 142(2)(a), that is to go for the special audit; and 3 143 subsection 3 वाला। तो देखो, if the after filing the return of income, if the taxpayer fails to comply with the terms of notice under section 143 subsection 2, that is the scrutiny assessment. If the assessing officer is not satisfied with the correctness or completeness of the accounts of the taxpayer, okay, or if he has no method of accounting has been regularly employed. You know that there are 2 methods of accounting that I have taught you in the PGBP, cash based and mercantile system, and you are regularly changing. Like in 1 year you are adopting the cash based, next year your accrual, 3rd year again cash based, 4th year again accrual. If this kind of activity you are doing, then in all these cases he has a right that you ask to you that you go for the special audit. Okay. Now see, from above criteria it is observed that base judgment assessment is restored. Sorry, देखो ये 2 सिचुएशन में आपको ऑडिट कराने के लिए बोल सकता है। और देखो अगर आपने ये सब का कॉम्प्लायंस नहीं किया तो बेस जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। ओके, तो देखो बेस जजमेंट असेसमेंट कौन कौन सी सिचुएशन में दे सकता है, ये जो है ना, ये बुलेट पॉइंट, ये 4 आप देखिए, ये सब पॉइंट है उसके। तो बुलेट पॉइंट में आपको क्या बोला कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, एक पॉइंट आपको बेस जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। सेकेंड, आपने 142(1) का नोटिस का कॉम्प्लायंस नहीं किया, मतलब आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला, आपने नहीं फाइल किया। एक तीसरा बुलेट आप देखो कि आपको स्क्रूटिनी असेसमेंट का नोटिस आया, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, या तो फिर आप आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग कंटिन्यूअसली चेंज करते हो, वो केस में। मतलब 4 सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको बेस जजमेंट असेसमेंट करवाने के लिए बोल सकता है। कौन कौन सी? रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, या तो फिर रिटर्न फाइल करने की नोटिस आई, उसका रिप्लाई नहीं दिया, या तो फिर आपने 140 या तो फिर आपने ये आपका जो ऑडिट का कराने के लिए असेसिंग ऑफिसर ने बोला, ये वाला पॉइंट, ऑडिट कराने के लिए बोला, आपने ऑडिट नहीं करवाया, या तो फिर आपने ये स्क्रूटिनी का नोटिस है, आपने स्क्रूटिनी के लिए जो रिस्पॉन्स देना था वो नहीं दिया, या तो फिर आप कंटिन्यूअसली जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करते रहते हो और उससे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं। तो ये 5 सिचुएशन में okay, you can ask that you can go for the base judgment assessment. समझ में आ रहा है बेटा? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो इन दिस 5 सिचुएशन, देखो ये 5 सिचुएशन, ये 5 बुलेट पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये 5 बुलेट पॉइंट में बोला है कि आप ऑडिट करो, मतलब आप वो बेस जजमेंट में जा सकते हैं। यहाँ नोट करके आपको दूसरे 2 पॉइंट बोला है कि भाई 142 1 का नोटिस क्या है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए बोलता है आपको। 143 टू ए का नोटिस क्या है, तो उसके अंदर वो आपको क्या बोलता है कि आप स्पेशल ऑडिट करवा दो। ओके, और 143 2 का नोटिस क्या है, स्क्रूटिनी का। ओके, अभी देखो ये बेस जजमेंट असेसमेंट कैसे करता है, क्या टाइम लिमिट है, लेट अस डिस्कस। फ्रॉम अबाउट क्राइटेरिया इट इज ऑब्जर्व दैट द बेस जजमेंट असेसमेंट is restored in the cases where return of income is not filed by the taxpayer, मतलब या तो उसने रिटर्न नहीं फाइल किया, और if there is no cooperation by the taxpayer in terms of furnishing information or explanation related to the tax assessment, मतलब आप देखो उसने डॉक्यूमेंट मांगे, इंफॉर्मेशन मांगी, आपने नहीं दिया, मतलब क्या कर रहे हो आप, अल्टीमेटली यू आर नॉन कोऑपरेटिंग टू दी असेसिंग ऑफिसर, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो बेस जजमेंट असेसमेंट, मतलब ये जो 5 पॉइंट है दैट इज समराइज इन दिस 1 पैराग्राफ। ओके, तो अगर आप ऐसा ये 5 पॉइंट को 2 लाइन में बोलना है तो वही है कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, या तो फिर फाइल करने के बाद आप कोऑपरेट नहीं करते हो, या तो फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट नहीं है। इन दिस सिचुएशन ही कैन आस्क टू यू फॉर द बेस जजमेंट असेसमेंट। नाउ हाउ ही विल कंडक्ट द बेस जजमेंट असेसमेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द बेस जजमेंट असेसमेंट। तो इफ द अबाउ कंडीशन, वो 5 बुलेट पॉइंट आपको मैंने बताया, नाउ इफ ऑल दैट बुलेट पॉइंट्स आर गेट सेटिस्फाइड, if above conditions, if the conditions given above calling for the base judgment assessment are satisfied, then assessing officer will serve the notice। देखो अभी भी वो बेस जजमेंट असेसमेंट नहीं करेगा, आपको नोटिस देगा। he will serve the notice to the taxpayer to show cause why the assessment should not be completed to the best of his judgment। कि वो आपको नोटिस देगा कि भाई તમારા કેસમાં બેઝ જજમેન્ટ અસેસમેન્ટ અમે કેમ ના કરીએ, એનું શો કોઝ આપે, સપોઝ તમે આપી શકો કે તમે કોઓપરેટ નહોતું કર્યું, તો પછી તમે રિટર્ન નથી ફાઇલ કર્યું, એનું જસ્ટિફિકેશન તમે આપી દો, અને ઇફ ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ ही विल नॉट गो फॉर द बेस जजमेंट असेसमेंट। बट सो वो डायरेक्टली बेस जजमेंट नहीं करेगा, बिफोर दैट ही विल गिव यू अ शो कोज नोटिस। शो कोज नोटिस એટલે તમારે કારણ આપવાનું છે કે ભાઈ મારે તું મારા કેસમાં બેઝ જજમેન્ટ અસેસમેન્ટ ના કરી, મેં આ નોન કોઓપરેશન કર્યું છે, કે ભાઈ રિટર્ન નથી ફાઇલ કર્યું, એની પાછળ આટલા જેન્યુઇન રીઝન છે, ધેટ્સ વાય આઈ એમ અનેબલ ટુ produce the information to you, and that's why it is requested to you that you don't go for the base judgment assessment, है ना। तो बेस जजमेंट वो डायरेक्टली नहीं करेगा, आपको सोकोस नोटिस देगा। नाउ सी, no notice given above is required in case where the notice under section 142 subsection 1 has been issued prior to making the assessment। जब आपको 142 1 का नोटिस दिया, आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला है, तो फिर कोई इंफॉर्मेशन मांगा है आपसे और वो नहीं आपने दिया, वो डायरेक्टली बेस जजमेंट कर देगा। ओके, क्योंकि वो नोटिस ही एज गुड एज क्या है, आपसे इंफॉर्मेशन 2-3 बार वो मांगता है, आप नहीं देते हो, देन ही विल डही। तो ये नोटिस जो सोकोज नोटिस है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है अगर उसने ऑलरेडी आपको 142 1 का नोटिस दे दिया है कि भाई तू तेरा रिटर्न फाइल कर। ओके, या तो फिर रिटर्न फाइल किया तो उसके सपोर्टिंग में इंफॉर्मेशन जैसा 142 1 का नोटिस आपको सर्व कर दिया। ओके, 142 1 का नोटिस क्या, रिटर्न फाइल करने के लिए वो बोलता है। वो 2-3 बार नोटिस दिया, आपने नहीं रिस्पॉन्ड किया, देन ही कैन डायरेक्टली गो फॉर द बेस जजमेंट असेसमेंट। he will not issue the so called notice also। Okay, now if the assessing officer is not satisfied with the argument of the taxpayer and he has a reason to believe that the case demand a base judgment assessment, then he will proceed to carry out the assessment to the best of his knowledge। अभी आपने सपोज इसने आपको सोकोज नोटिस दिया, तो सोकोज नोटिस में आपने उसको रीजन दिया कि भाई आपने क्यों इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट की और मेरे केस में क्यों बेस जजमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसे अपने रीजन दिए। बट इफ ही इज सेटिस्फाइड ही विल नॉट गो फॉर द बेस जजमेंट असेसमेंट। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, then from based of his information available to him, he will, and based of the knowledge available to him, he will go for the base judgment assessment। Now see, if the above criteria of the base judgment assessment are satisfied, then after taking into account all the relevant material assessing officer has gathered, देखो यहाँ आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो,
ओके, आपने दिया ही नहीं इंफॉर्मेशन, तो वो ऑडिट वो आपका असेसमेंट कैसे करेगा? तो जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, आपको कल मैंने बताया था EIS, TIS, वेरियस एयरलाइंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंक, RBI, योर एम्प्लॉयर, ओके, these all people are submitting your information to the income tax department, and they also gather the information from the market and see whatever information available to him. Based on that, he will conduct the assessment and he will issue directly order that you are supposed to pay this much tax along with this much interest. કારણ કે હવે જો તમે ફાઇલ નથી કરી રિટર્ન ટાઈમ પર, એટલે તમારી પર 234 એનું ઇન્ટરેસ્ટ લગાડશે, તો 10,000 કરતાં વધારે ટેક્સ લાયબિલિટી છે, તો 234B, 234C, देन 234F वाली जो फीस है और जो पेनल्टीज है, सब कुछ लगा के आपसे वो ऑर्डर इश्यू करेगा। ओके, तो देखो, इफ अबव क्राइटेरिया ऑफ द about base judgment assessment, if the above criteria of the base judgment assessment are satisfied, then after taking into account all the relevant material which the assessing officer has gathered, and after giving a taxpayer opportunity of being heard, okay, उसको वो अपॉर्चुनिटी देता है, आपको ये शो कॉज नोटिस भी देता है, आपको मतलब you have to present yourself that why you should not have to conduct the base judgment assessment in my case। तो आपने तो अपॉर्चुनिटी भी देगा। असेसिंग ऑफिसर सेल make a assessment of the total income or loss based of his knowledge, public judgment, and determine the sum payable by the taxpayer on the basis of such assessment। So this is called base judgment assessment। देखो now within what time limit he should have to complete the base judgment assessment। देखो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए, को ये नया मटेरियल मैं बना के दूंगा, उसमें नहीं आएंगे, आपको सिर्फ लेटेस्ट देखना है ये वाला। तो देखो 2020 टू 23 ऑनवर्ड्स ये बेस जजमेंट असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर को कितने टाइम में कंप्लीट करना पड़ता है? तो विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम वॉज फर्स्ट असेसेबल। तो कोई પણ ઇન્કમ એનું જે પહેલું અસેસમેન્ટ યર હોય, લાઈક સપોઝ 20 ટુ 23 में आपने इनकम अर्न की, तो व्हेन द इनकम इज फर्स्ट असेसेबल, तो असेसमेंट ईयर 23-24 में इनकम इज फर्स्ट असेसेबल। तो वो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है, उसके 12 मंथ के अंदर उसको ये बेस जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, ये इंटरनल मैटर है, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट्स। Now the last assessment. I hope that you have understood that what is the base judgment assessment. Now one of the last kind of assessment is the assessment under section 157 of the Income Tax Act. Okay, so it is called income escaping assessment। मतलब देखो, आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो गया है, आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और उसके बाद कुछ सालों के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपका असेसमेंट भी हो गया है, और फिर भी आपने वो कोई एक साल में आपने कुछ इनकम अर्न की थी और वो आपने एस्केप किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया नहीं, आपके रिटर्न में दिखाया नहीं है, तो ही કેન ઓપન, એટલે પાછલા રેકોર્ડ પણ તમારા ઓપન કરે, જેનું અસેસમેન્ટ પૂરું થઈ ગયું છે એવા રેકોર્ડ ઓપન કરીને અસેસમેન્ટ કરશે, then that assessment is known as income escaping assessment। suppose if you have escaped the huge income and if they believe that कि भाई आपका भले वो आप बोलो कि 2002-23 સોરી 2010-15 મારું 10-12 10-11 વાળું જે અસેસમેન્ટ યર છે એનું અસેસમેન્ટ મારું પૂરું થઈ ગયું છે અને અત્યારે એને ખબર પડી કે ભાઈ તમે इनकम एस्केप करी है, तो वो आपका भले वो साल का असेसमेंट कंप्लीट हो गया, फिर भी उसको ओपन करके असेसमेंट करेगा, एंड आज टू यू द पे द टैक्स, ओके, फॉर दैट अर्लियर ईयर्स फॉर विच द असेसमेंट इज कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। लेट अस डिस्कस इट फ्रॉम द मटेरियल कि आपने कोई इनकम को एस्केप किया है। एस्केप का मतलब छुपा देना, आपने एस्केप मतलब दिखाया नहीं है, ओके। पर वो केस के अंदर जब उनको बाद में पता चलता है डिपार्टमेंट को कि आपने कुछ ऐसी इनकम छुपा दी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने रिटर्न में नहीं दिखाई, देन इन दैट केस दे कैन गो फॉर द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो यू कैन सी हियर फाइनेंस एक्ट 2020-21, ओके, 2021 सॉरी, ये फाइनेंस एक्ट है 2021 का। उसमें उसमें क्या किया, has substituted the existing section 147, 148, 149 and 151। तो इतने सेक्शन हटा दिए इनकम टैक्स सेक्शन, एंड ऑल्सो इंसर्टेड वन न्यू सेक्शन दैट इज 148 सबसेक्शन 148A।
मतलब ये सभी सेक्शन एग्जिस्टिंग सेक्शन को सब्स्टिट्यूट करके एक नया सेक्शन आया 148 के। तो यू कैन सी हियर बोला है असेसमेंट अंडर सेक्शन 140 but that section is replaced by this section. So now if any assessment is carried on under the income escape assessment, it is not under section 147 but it is under section 148A, ये section, because it has replaced the old section. भले यहाँ heading ये दिया है, but now if you see, so this section has replaced all these sections. So she inserted section 148A, making a complete change in the assessment proceeding relating to income escaping assessment. पहले ये सभी सेक्शन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट से डील करते थे, अभी इसकी जगह गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट में ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया एंड इट इज सब्स्टिट्यूटेड। तो वो सब सेक्शन की जगह पे ये सेक्शन को लेके आया, ओके, एंड इट हैज मेड द कंप्लीट चेंज इन द प्रोसीडिंग ऑफ द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। देखो ये वाला जो असेसमेंट है वो कौन से नाम से जाना जाता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एंड सर्च रिलेटेड केसेस। ओके, इन सर्च रिलेटेड केस आपके यहाँ जो रेड पड़ती है वो क्या है, सर्च लेते हैं आपके यहाँ आके, सब डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपके घर में घुस जाते सब, है ना, प्रॉपर्टीज या कैश पड़ी है या नहीं, कुछ गहने पड़े या नहीं, वो सब चेक करते हैं। तो वो सब आता है कौन से सेक्शन में, 148 में, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और सर्च रिलेटेड केसेस बोथ आर फॉल इन दिस सेक्शन। नाउ सी द न्यू प्रोविजंस रिलेटेड टू रीअसेसमेंट आर एज फॉलो। देखो ये रीअसेसमेंट मतलब आपको ऑलरेडी तो असेसमेंट कितने सालों का हो गया है अभी आप, और उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई आपने कुछ इनकम छुपाई है, तो इसीलिए असेसमेंट करते हैं, तो इसको रीअसेसमेंट भी बोल सकते हैं। देखो अब एनी इनकम ऑफ द असेसी हैज एस्केप, एस्केप એટલે ચેક કરવાની રહી ગઈ છે કે તમે બતાવી જ નથી, ઓકે, if any income of the assessee has escaped for any assessment, the assessing officer may subject to the new provisions, देखो नए provisions आए 148 to 153, assess or reassess such income and also the other income which has escaped the assessment, okay, the इनकम जो एग्जिस्टिंग आपने बताई है उसको भी चेक करेंगे, और जो आपकी एस्केप हो गई मतलब जो आपने रिटर्न में नहीं दिखाई, कोई एक साल का रिटर्न फाइल किया उसके अंदर आपको इनकम थी और दैट इनकम यू आर नॉट शोन, ओके, और आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया, इट डज नॉट मीन दैट असेसमेंट इज ओवर। आफ्टर फ्यू इयर्स आल्सो दिस अंडर सेक्शन 148 द असेसमेंट कैन ओपन एंड दे कैन do the assessment of the income which was escaped in the earlier year. Okay, so assess or reassess such income and such other income which has escaped the assessment. The assessment માંથી રહી ગઈ છે એવી income ને ફરી assess કરશે. Which come to notice subsequently in the course of the proceeding. मतलब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर उनको पता चला कि यार ये इनकम का इसका असेसमेंट रह गया, इस पर टैक्स लेने का रह गया है, ओके, तो वो टैक्स लेने के लिए आपका रीअसेसमेंट करेंगे, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करेंगे, ओके, तो विच कम टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग और रिकम्प्यूट द लॉस और डेप्रिसिएशन और अदर अलाउंसेस एज केस में बी इन दैट ईयर, ओके, उनको लगता है कि भाई इनकम एस्केपिंग डज नॉट मीन ओनली इनकम इज एस्केप, सपोज इफ यू क्लेम एक्सेस डेप्रिसिएशन और इफ यू क्लेम द एक्सपेंस एज अ डिडक्शन, तो भी कोई एक का प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा, तो आपने कम टैक्स पे किया होगा। इफ लेटर स्टेज इफ द डिपार्टमेंट कम टू नो दैट आपने कुछ ऐसा एस्केपमेंट किया है, then they can reopen your assessment and that is assessment under section 148A, okay, that is income escaping assessment, okay. Now what is this, it is imperative to note that once the assessment or reassessment or recomputation has started, तो एक बार वो आपका फाइल ओपन कर देता है, रीओपन, the assessing officer is empowered to assess or reassess the income which has escaped for the assessment and which has come to his notice subsequently in the course of proceeding, okay, under this procedure, notwithstanding that the procedure prescribed under section 148A was followed before issuing the such notice, issuing the such notice for such income, okay, मतलब उससे एक बार इसने आपका ये फाइल ओपन किया और उसके बाद उसने असेसमेंट चालू कर दिया और उसको पता चला कि भाई कोई छुपी हुई इनकम आपने नहीं दिखाई थी, उसके लिए जस्ट आई एम रीडिंग अगेन,
See what it says. It is imperative to note that once the assessment or reassessment or recomputation has started, मतलब उसने आपका इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट चालू कर दिया, असेसिंग ऑफिसर इज empowered, उसको पावर दिया गया है टू असेस और रीअसेस द इनकम विच हैज एस्केप्ड द असेसमेंट, એટલે જે અસેસમેન્ટમાંથી રહી ગઈ છે બધી ઇન્કમને અસેસ કરવાનો રાઇટ છે, and he is empowered, and which comes to his notice subsequently, मतलब सपोज वो आपको एक नोटिस भेजता है, उसके अंदर बोलता है आपका ये इनकम छूट गया है और इसका हम असेसमेंट करते हैं, और वो प्रोसेस के अंदर अगर दूसरी कोई इनकम भी ढूंढ लेता है कि ये भी रह गई, तो उसको भी उसको असेस करने का राइट है। ठीक, तो देखो which come to his notice subsequently in the course of proceeding under the procedure, okay, and that procedure, that procedure prescribed in new section 48A was not followed before issuing such notice of income, मतलब ये नोटिस दी आपको कि आपका इनकम असेसमेंट ये इनकम के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी कोई इनकम आई तो उसको भी, जो एस्केप हो गई है तो उसको भी असेस करने का असेसिंग ऑफिसर को पावर है, ऐसा ये सेक्शन कह रहा है। ओके, देखो असेसिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू मेक एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस दिया है कि कैसे वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करेंगे। ठीक है, हाँ वी विल कंडक्ट द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक whether we should go for this or not. हम ये पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे, ठीक है, इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, इंटरनल डॉक्यूमेंट है इनका। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट ही देखेंगे कि भाई कितने टाइम तक इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो सकता है, ओके, और असेसिंग ऑफिसर कब नोटिस दे सकता है। तो लेट अस डिस्कस स्टूडेंट, असेसिंग ऑफिसर कैन इश्यू द नोटिस फॉर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ओके, तो असेसिंग ऑफिसर से सर्व ऑन द असेसिंग नोटिस अंडर सेक्शन 148। देखो आपको आपको मैंने नोटिस काफ़ी सारे सेक्शन की बताई, यू कैन सी हियर आई हैव डिस्कस विथ यू नोटिस अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 कब दिया जाता है वो, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो फाइल करने के लिए 142(1) का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, फिर 142(2)(a) का नोटिस भी बोला आपको, वो कब दिया जाता है कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपके केस में स्पेशल ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट करवाने के लिए नोटिस दिया जाता है, दैट इज 142(2)(a। फिर 143(3) का नोटिस, दैट इज फॉर स्क्रूटिनी असेसमेंट नोटिस। ओके, फिर आपको एक शो कॉज नोटिस आपको मैंने बताया कि वो भी सर्व किया जाता है अंडर सेक्शन 144, दैट व्हाई द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, सॉरी, व्हाई द बेस जजमेंट असेसमेंट शुड नॉट बी अप्लाई इन योर केस, फॉर दैट पर्पस दी शो कॉज नोटिस इज सर्व्ड। एंड देखो ये 148 का नोटिस है कि आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करने के लिए जो नोटिस दिया जाता है, दैट इज नोटिस अंडर सेक्शन 148। So assessing officer shall serve the assessee a notice under section 148 along with the copy of order passed under section 148A requiring him to furnish the return of income or income of other person in respect of which he is assessable under this act, okay, during the previous year corresponding to the relevant previous year। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि असेसिंग ऑफिसर आपको 148 की नोटिस दे सकता है, ओके, लेकिन वो डायरेक्ट नोटिस नहीं देगा। देखो कोई भी असेसिंग ऑफिसर जो होता है ना, वो एक छोटे लेवल का इंस्पेक्टर लेवल का बंदा होता है। ठीक है, वो क्या करता है, अगर आपको उनको लगता है उसको कि भाई आपके केस में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना चाहिए, तो ही विल रिप्रेजेंट हिज केस टू द जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड दैट इनकम टैक्स कमिश्नर विल pass a order that yes you can issue the notice to so and so person for
कंडक्टिंग द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, वो आपको सिर्फ नोटिस नहीं भेजेगा, उसको इनकम टैक्स कमिश्नर ने जो ऑर्डर किया है कि ये केस में आप इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकते हो, तो ऑर्डर के साथ आपको वो नोटिस सर्व करेगा। फॉर व्हाट? तो आपको बोलेगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, या तो फिर आपने फाइल किया वो प्रेजेंट करो इन रिस्पेक्ट ऑफ योर इनकम। देखो, रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। ओके, रिटर्न ऑफ इनकम अगर आपने फाइल नहीं किया तो फाइल करने के लिए बोलेगा, फाइल किया है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, और देखो रिटर्न ऑफ इनकम आपसे मांगेगा फॉर योर इनकम। देखो, समटाइम्स यू आर असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन, लाइक सपोज आई एम अ ट्रस्टी इन अ ट्रस्ट और डायरेक्टर इन द कंपनी, then see, notice will be, suppose I am an authorized person to sign the return, then notice is served to me and it is asked me that you produce this return। तो नोटिस देखो यहाँ आपकी इनकम के लिए आपको दिया जा सकता है, और ऑफ द इनकम ऑफ द अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच यू आर असेसेबल। Suppose I am a trustee in a trust and assessable for a trust, then they will ask me to produce the document or to submit the return of income of my trust। So notice is served for your income or for the income of the person in respect of whom you are assessable। Okay, in this during देखो assessable during the previous or corresponding to relevant assessment, and return shall be furnished within 3 months from the end of the month in which such notice is issued। देखो, તમને 148 ની નોટિસ આવે તો પછી તમે રિટર્ન ફાઇલ જ નથી કરી, એટલે તમને ફાઇલ કરવાનું કહેશે, તમે રિટર્ન ફાઇલ કરો। ઓકે, તો તમારે આ નોટિસ 148 ની આવે તો એના કેટલા ટાઈમમાં રિટર્ન ફાઇલ કરશે? કારણ કે તમે રિટર્ન નથી ફાઇલ કર્યું, મતલબ કોઈ એક વર્ષમાં ઇન્કમ તમને થઈ ગઈ, તમારે એના પર ટેક્સ ભરવો જોઈતો હતો, બટ તમે ટેક્સે ના ભર્યો, રિટર્ન ના ફાઇલ કર્યું, અને હવે પછી એ લોકોને ખબર પડી કે તમે આના પર રિટર્ન નથી ફાઇલ કર્યું, તો 148 ની નોટિસ આવે। એ 2 વર્ષ પછી પણ આવે, 3 વર્ષ પછી પણ આવે, 10 વર્ષ સુધી ગમે ત્યારે આવી શકે। તો ભલે સપોઝ મેં 2014-15માં કોઈ ઇન્કમ અર્ન કરી છે ને હવે ટેક્સ નથી ભર્યો, રિટર્ન નથી ભર્યું, હું ખુશ થઈને ફરતો हो कि जो આપણે આટલા કમાયા था तो टैक्स नहीं भरे, तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस आपको 148 का 10 साल तक कभी भी आ सकता है। जब भी 148 का नोटिस आता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असेसी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असेसी इज व्हाट, that he is supposed to submit the return within 3 months from the end of the month in which the notice is issued। ઓકે, જે મહિનામાં નોટિસ આવી એ મહિનો પૂરો થાય એના 3 મહિનામાં તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું છે। दिस पीरियड ऑफ 3 months कैन बी एक्सटेंडेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। यस, अगर आपको लगता है कि यार 3 महीना ओछो टाइम है, यू कैन रिक्वेस्ट टू द असेसिंग ऑफिसर एंड असेसिंग ऑफिसर कैन एक्सटेंड दिस पीरियड ऑल्सो। ओके, नाउ द नोटिस शैल बी इश्यूड in a prescribed form and verified in the prescribed manner, and setting for such other particulars as may be prescribed, and provisions of the income tax act shall so far as may be applied accordingly, if such return were required to be furnished under section 139। ओके, मतलब देखो, ये जो नोटिस आपको देगा असेसिंग ऑफिसर, वो वैसे ही एक नॉर्मल लेटर पे ड्राफ्ट करके नहीं देगा, वो नोटिस का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, मैंने आपको बोला प्रिस्क्राइब का मतलब इसके कोई रूल्स हो गए, तो रूल्स फॉलो करके आपको वही फॉर्मेट में वही मैनर में आपको नोटिस सेंड करेगा। एंड सेटिंग फॉर सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब दूसरे पर्टिकुलर्स भी आपसे वो मांग सकता है। और देखो 139 वाला जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है, उसके अंदर जो आपसे जो माहिती मांगी जाती है वही माहिती आपसे यहाँ पे भी मांगी जा सकती है। ओके, देखो सर्कमस्टेंसेस इन विच द नोटिस कैन बी इश्यूड, आपको ये नोटिस कब दिया जाता है? ओके, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन विद द असेसिंग ऑफिसर। तो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है और इट सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज बीन एस्केप्ड, कोई ना कोई इनकम टैक्स ऑफिसर पास कोई माहिती आई कि भाई आ माणसे आटला रुपया कमाया છે પણ એને ટેક્સ નથી ભર્યો, તેને રિટર્ન નથી ફાઇલ કર્યું, એન્ડ ધ ઇન્કમ ઇઝ એસ્કેપ ફ્રોમ ધ અसेसमेंट, असेसमेंट કરવાનું રહી ગયું છે કોઈ ઇન્કમ પર, ऐसी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है, तो फिर वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? ही विल गो फॉर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। असेसिंग ऑफिसर डायरेक्टली नोटिस नहीं सर्व कर सकता, वो अथॉरिटी के पास जाएगा, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर के पास। ओके, फिर उसका प्रायर अप्रूवल लेगा। Okay, the prior approval of the specified authority is required to obtain before issuing the notice by the assessing officer। However, देखो कुछ केस में प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए,
However, no such prior approval is required if the assessing officer has passed an order under section 148 AD with prior approval of the specified authority stating that the income was escaping, sorry, that the income is the escaping assessment. मतलब ये 148 डी में कुछ कंडीशन लिखी गई होगी और वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रायर अप्रूवल की उसको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम इतना नहीं जाएंगे, आप इतना याद रखो, ये फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें मत जाइए। तो अभी वो व्हेन दी इट शैल बी डीम्ड दैट इनकम हैज एस्केप्ड द असेसमेंट, कि भाई उन असेसिंग ऑफिसर को कब लगेगा कि भाई आपने इनकम, आपकी इनकम जो है वो असेसमेंट से बाहर है, असेसमेंट नहीं हुआ है। तो ये सब सिचुएशन इसके अंदर ये कंडीशन है, हम उसमें नहीं जाते। इनकम अगर असेसमेंट से रह गई है तो ये किया जाएगा। ओके, तो ये सब में हम नहीं जा रहे हैं। वी विल जस्ट डिस्कस दैट विद इन व्हाट टाइम पीरियड ही कैन इश्यू द नोटिस। देखो आपको और कितने टाइम में वो नोटिस दे सकता है। आपको जो मटेरियल दूंगा यहाँ से ही जो पढ़ा है उसमें से ही दूंगा, सो डोंट वरी। टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग द नोटिस, आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस कब दिया जाएगा। इन जनरल देखो, नो नोटिस शैल बी इश्यूड इफ द 3 years हैव एस्केप्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट। मतलब समझी लो कि 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે, લાઈક સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ અસેસમેન્ટ યર પ્રીવિયસ યર 2023 22 23, उसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है 23-24। तो 23-24 से 3 साल चले गए हैं, तो वो 23-24 असेसमेंट ईयर की कोई इनकम एस्केप हो गई है तो हो गई है, उसके लिए अभी बाद में वो नोटिस नहीं इश्यू कर सकता। मतलब असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया, उसके 3 साल के बाद अगर कोई इनकम छूट भी गई है तो भी उसके लिए नोटिस नहीं दे सकता। तो व्हाट इज द टाइम लिमिट, समझे जो હું કહેવા માંગુ कि 21 22 23 में कोई इनकम अर्न કર્યો એનું અસેસમેન્ટ લોજિકલી ક્યારે થવું જોઈએ, અસેસમેન્ટ યર 23-24 में। અસેસમેન્ટ યર 23-24 में અસેસમેન્ટ થઈ ગયું, પણ પછી એને એના માટે એને ઇન્કમ એસ્કેપિંગ અસેસમેન્ટ કરવું છે કે કોઈ ઇન્કમ છૂટી ગઈ છે અને એનું અસેસમેન્ટ કરવું છે, નોટિસ તમને સર્વ કરવા માંગે છે તો ક્યાં સુધી કરી શકે કે અસેસમેન્ટ યર પૂરું થયું એના 3 વર્ષ સુધી, 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા એ અસેસમેન્ટ યરને, then after he cannot issue the notice. So in general this is the time limit that he can issue the notice for income escaping assessment. Okay, no notice shall be served if the 3 years have lapsed from the end of the relevant assessment. રિલેવન્ટ અસેસમેન્ટ ત્યારથી 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા હોય તો પછી તમને નોટિસ ના ઇશ્યુ કરી શકે। હા, પણ સમજી લો કે અસેસ ઇન જનરલ, પણ તમારી પાસે અસેસિંગ તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ અસેસિંગ ઓફિસર પાસે છે તો એ કેસમાં તમને કેટલા વર્ષ સુધી, જો ઇન જનરલ એનો મતલબ અસેસિંગ ઓફિસર ઇઝ નોટ પજેસિંગ યોર डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, पर असेसिंग ऑफिसर के पास ये सब इंफॉर्मेशन है। देखो, when the assessing officer has in his possession the books of account or document or evidence, અસેસિંગ ઓફિસ પાસે તમારા પર બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છે, એવિડન્સીસ છે, એન્ડ ફ્રોમ ધેટ ઇટ રિવેલ્સ ધેટ ઇન્કમ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ represented by asset expenditure in respect of the transaction or any entries or entries in the books of account which has escaped the assessment or is likely to amount to be 50 lakh or more। તો જો અસેસિંગ ઓફિસર પાસે તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છે અને એની અંદરથી એને એવું રિવેલ થતું હોય કે તમારી પાસે કોઈ અસેટ છે કે પછી તમે કોઈ એક્સપેન્ડિચર કર્યો છે કે પછી તમારી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં કોઈ એક એવી એન્ટ્રી છે જેનું અસેસમેન્ટ રહી ગયું છે, એટલે એકલી ઇન્કમ નહીં, તમારી અસેટનું, એક્સપેન્ડિચરનું કે એની એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ, ઓકે, ફોર વિચ ધ અસેસમેન્ટ इज एस्केप्ड एंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एंट्री इज ₹50 लाख और मोर। देखो इन जनरल क्या है कि अगर आपके पास उसके पास ये सब इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन जनरल ही कैन नॉट इश्यू द नोटिस बियॉन्ड द 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बट इफ ही इज possessing all this information, if he is having a proof, then he can issue the notice beyond the period of 3 years but not beyond the period 10 years from the end of the relevant assessment year। मतलब 10 साल तक अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो 10 साल तक। Okay, if he possesses all this information, then beyond 3 years also he can issue the notice, and up to how many years? Up to 10 years from the relevant assessment year। જે relevant assessment year ની income escape થઈ ગઈ હોય ના 10 વર્ષ સુધી એ તમારી પાસે income escaping assessment ની નોટિસ તમને સર્વ કરી શકે। ઓકે, risk based assessment we have discussed। ओके, हम इतना ही
ये सब डिटेल वाला जो है ये इंटर डिपार्टमेंटल है, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। ओके, तो फेसलेस असेसमेंट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, देन दिस नोटिस इज इनफ। ओके, तो टाइम लिमिट टू इश्यू, देन व्हाट इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वो हमने देखा, और कब वो आपको नोटिस इश्यू कर, मतलब कितने टाइम पीरियड तक इश्यू कर सकता है। ओके, दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। आई विल मेक द मटेरियल एंड विल प्रोवाइड द मटेरियल by today evening. Yesterday I was out of station, so I could not, but see today evening, by today evening I will send the material to you. Now see here, once you'll get this material, your यूनिट 4 इज गेट ओवर। यूनिट 4 आपका यहाँ कंप्लीट कर देते हैं हम। ठीक है, आई डिक्लेयर द यूनिट 4 ऑफ direct text flow is get over here. I'll provide the material by today evening. uh, I'm not starting the new chapter, but see, I will start the new chapter by today evening. So today evening again we will meet, and we will have a class from 7 o'clock to 9 o'clock, and in that we will डिस्कस अ न्यू चैप्टर ऑफ यूनिट 3, सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला जो चैप्टर है, अलॉन्ग विद द एग्जांपल वी विल डू बाय टुडे इवनिंग। ये यहाँ तक हमारा आज कंप्लीट होगा। ओके, सो राइट नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हेलो।